ठीक है। तो सेटा होचे जोटा लास्ट क्लास तो मैं डिस्कस करथली ऑब्जेक्ट्स क्लास विषय defines the objects of the company, indicates the sphere of its activities as per section 4.1c. In this class must be stated the objects for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof. The company the main object कौन रहुची for why, for what reason the company has come to being, why the company is incorporated. There must be object. Without object, there cannot exist a company. Otherwise, why a group of people are going to come together? They must have some object, right? The ultimate or the ulterior object is making money. Okay, making profit. That's always the ulterior object in most cases. Although there are non-profit organizations also, but in most cases the ulterior object is always making money. So then we'll discuss what is doctrine of ultra vires. So what is ultra vires? When a company which owes its incorporation to statutory authority cannot effectively do anything beyond the powers expressly or impliedly conferred upon it by the statute or memorandum of association. Any purported activity beyond such power will be ineffective even if agreed to by all the buyers. This rule is commonly known as doctrine of ultra vires. Word ultra vires means beyond the word the word ultra means beyond, the word ultra means beyond, and the word virus means powers. So it means beyond the powers. Ultra virus therefore means beyond the powers. So when used as reference to a company, it means beyond the powers of a company. So I told you, if a person is not 18 years and he is contracting, in Contract Act, a person who is not 18 years is not allowed to contract. So if he is contracting, it is beyond his power. He cannot do it. It is ultra virus, so it is void ab initio. The same principle applies here. If the company is doing something which is beyond its power, that means it is not given in the objects clause of the company. Whatever, for whatever reason the company is incorporated, like what is incorporation? You are receiving a statutory stamp on you that you are allowed to carry on this and this business, isn't it? Otherwise, company can't be incorporated. It is a stamp by the government which is put on the company name that you are allowed to do this kind of things and all. The says answer that is then तापर सेटा statutory incorporation गोटे किछि कुआ जिबानी statutory incorporation माने even if it's a private company तमे government गोटे seal of approval आनछन whatever it is that you are going to do it is approved त से से कहउछि जे once you are approved you are only to work within whatever it is you are approved सते जिंस करबा ताठो जदि extra कल it will be ultra high. Simply speaking, if the objects allows me as a company to deal with only a software business, that I'm example totally, and I am going to make an agreement in which I'll be dealing in retail business, maybe rice supply agreement hela, maybe biscuits hela, whatever retail tami janicho. So say jinsa hela mane it will be ultra virus because it is beyond my scope. But if it is incidental or consequential to whatever it is that I am doing, that may be allowed. But if it's a totally different, software agreement रे रिटेल बिजनेस कथा आसुनी मु सॉफ्टवेयर माने ऑफिस सेटअप करछि सेठी रिटेल रा जिंसा किछटा दरकार चा पत्ती आनिया दरकार बिस्किट्स आनिया दरकार क्लाइंट आसबे तांको दबा दरकार सेगुरा पे मु छोटो छोटा एग्रीमेंट कर पारि दैट इज इन्सिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल टू व्हाटएवर इट इज आई एम डूइंग सेथरे के अटका के मत कर पारि तेणु मु सिंपली एना करना मोर कंपनी इनकॉर्पोरेशन ही सॉफ्टवेयर बिजनेस मु रिटेल रे पसी बिस्किट्स रा बिजनेस करे स्टार्ट करबी सेथुरु लाभ करबी दैट कैन नॉट बी अलाउड. This is what doctrine of ultra virus means. Asbury Railway Carriage and Iron Company versus Reach. In this case, the object of doctrine was explained to protect the investors of the company so that they may know the objects in which their money is to be employed, and to protect the creditors by ensuring that the company funds to which they must look for payment are not dissipated in unauthorized activity. The object हो चाहिए कंपनी ता कौन कंपनी ता जो
शेयर कैपिटल जो रोचे कंपनी पाखे जो टंका रोचे इट इज अल्टिमेटली पब्लिक मनी इजंट इट पब्लिक ही रोचे तुम यहाँ पब्लिक कंपनी पब्लिक मनी रोचे प्राइवेट कंपनी हेल्ले भी पब्लिक ही मनी रोचे ना प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी आम डेफिनेशन अलग कर दौर बट लोक तो पब्लिक ही रोचे ना फ्रॉम द नॉर्मल पब्लिक से मैंने ही जाऊँच तो पब्लिक कंपनी रे जो टिके अधिका लोक रोचन प्राइवेट कंपनी रे कम लोक रोचन दैट इज अंडरस्टूड बट स्टिल प्राइवेट कंपनी तो लोक रोचन ना से लोक तो किसी प्रोटेक्शन दरकार ना दैट प्रोटेक्शन इज गिवन केमिति that they are sure ki to protect the investors of the company so that they may know the object in which their money is employed so that जहाँ भाभी कि से देइथिबे टंका सेतिक रे ही काम हबो अल्ट्रा वायरस काम हेले असुविधा हबो सेत पे अल्ट्रा वायरस डॉक्टर न माने होचे जे कंपनी तार जहाँ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स अच्छे ताठू एक्स्ट्रा जिनस करें दैट विल बी भॉइड तो आज यदि मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी खाली रिटेल बिजनेस करी बोली मोटे एग्रीमेंट करदेकी आसी दैट विल बी भॉइड कहीं जो मैंने टंका मत देइछंती दे हैव पुट देयर फेथ इन मी ओके देन होची टू प्रोटेक्ट द creditors by ensuring the company funds to which they must look maintain a dissipated unauthorized activity अलग जिनस किसी होनी हम देन होची इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन कौन हम भॉइड एब इनिशियो जोटा मु तुम कहली कॉन्ट्रैक्ट जदि 18 वर्ष तळ हेच करूछ इट विल बी भॉइड एब इनिशियो इंजंक्शन कौन ना कंपनी इज अबाउट टू अंडरटेक अल्ट्रा वायरस एक्ट जति भी मु गोटे एक्ट मन कौन करी देछि गोटे सेमती गोटे एग्रीमेंट आई एम गोइंग टू एंटर इनटू रिटेल बिजनेस कि जति माने कि गोटे इन्वेस्टर हैला सपोज यू आर ए क्रिएटर ऑफ ए कंपनी एंड एज ए कंपनी suppose you are the creator of my company and I have made an agreement with another company that I'm going to enter into retail business without changing my memorandum of association. Okay, now you as a creditor, you want your money should be protected. Fine. बर्तमान मुझे सफ्टवेयर बिजनेस कर मोर किसी गोटे पैकिंग सेमती थी कथा सफ्टवेयर मे भी मोर नॉलेज थी कथा मे भी बीटेक कर एमटेक कर गोटे एंटरप्रेन्योर सफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट रिटेल बिजनेस मु मे भी सफ्टवेयर जदि मु बिजनेस कर मोर एक्सेल हम मु माने कौन प्रॉफिट करि परिबी मु रिटेल पसला माने मोर जेहेतु नॉलेज नहीं मे भी मोर प्रॉफिट हो पारिबो नहीं मे भी हम न हम पर कथा बट सिंस मोर बैकग्राउंड होची सॉफ्टवेयर मु सॉफ्टवेयर ही बेटर करबी ना तो जब मु रिटेल को एंटर करी कंपनी लॉस हम कंपनी लॉस है अल्टिमेटली लॉस कार हम गोटे क्रेडिटर हम तो इंजेक्शन किए कर से क्रेडिटर मैंने करेंगे शेयर होल्डर मैंने करेंगे इंजेक्शन मैंने दे आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट मी फ्रॉम डूइंग और एंटरिंग इनटू दैन एग्रीमेंट आई हैव ऑलरेडी एंटर इनटू दैट एग्रीमेंट बट दे आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट मी फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर इट इज मेंशन इन द एग्रीमेंट देन होची पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स कौन duties of the director to ensure that the corporate capital is used for the legitimate business company hence if the capital is diverted into purposes foreign to the company's memorandum director will personal liable to replace it this is what happens acquisition of property that is ultra virus एठी कौन ना गोटे जिनस जान company's money has been used ultra virus to acquire some property company's right over such property is held secure तुम तो यहाँ केमती है हेल्ड सिक्योर मैंने इवन इफ यू हैव डन समथिंग द कंपनी हैज डन सम अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड इन डूइंग दैट अल्ट्रा वायरस एक्ट द कंपनी हैज एक्वायर्ड सम प्रॉपर्टी द कंपनी स्टिल इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी कुआडे जाए कहीं कहीं ना टंका तो कंपनी यूज हो ना बिकज द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड फ्रॉम अल्ट्रा वायरस सब्जेक्ट रिप्रेजेंट द मनी ऑफ द कंपनी कंपनी टंका ही यूज हो तब कौन कर तुम ये करदेव डिस्ट्रॉय करदेव जदि माने एबे तार गोटे जो राइस सप्लाई एग्रीमेंट तुमको कहती लेट्स से राइस सप्लाई करिया को बाइंग ए ट्रक वाज नॉट नेसेसरी वी कुड हैव रेंटेड इट रेंट देते आम कर ट्रक किणा ना खर्च बहुत हम लेट्स से मु कर एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी मु कर आई हैव बॉट दैट ट्रक एबे से ट्रकटा कौन कर पोड़ीदेव जलिदेव नहीं ना कारण कंपनी टंका यूज कर किणी तो इट इज स्टिल द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इट रिमेन्स डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टी ये जो piercing ऑफ द कॉर्पोरेट वेल्थ हुए डायरेक्टर मान पर्सनली लायबल कराए इवेन दो दे आर एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द कंपनी स्टिल दे बिकम पर्सनली लायबल देन हूँ अल्टरेसन इन ऑब्जेक्ट्स क्लास कंपनी ऑब्जेक्ट धर चेंज कराया अच्छे सेमती हुए कंपनी ऑब्जेक्ट चेंज हे जमी जानी अभी जोमाटो जो अच्छी जोमाटो पेरेंट कंपनी गोटे होगा इटर्नाल तो से ऑब्जेक्ट चेंज करके व्हाट दे आर गेटिंग इनटू इज एआई सॉफ्टवेयर बिजनेस दे आर गेटिंग इनटू सो से जोमाटो ना अटैच केवल कौन जोमाटो जानले आम जानू फूड डेलीवरी बट जब से एआई उपर काम कर
आमर से जो माइंडसेटा गोटे लोक चेंज होगा दरकार ना जोमाटो जब कह जोमाटो ये कम कर लोक हजम हेनी बट इटरनाल गोटे नाटा शुणिले गोटे अलग टाइप लगुच इटरनाल गोटे अलग एंटिटी इट कैन एक्जिस्ट विदाउट जमी गूगल गूगल कहले आम जानूँ सर्च इंजिन गूगल से ही स्टार्ट होता बट गूगल बहुत अलग प्रोडक्ट्स भी अच्छे तो गूगल एवं कौन ना पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ऑब्जेक्ट्स अलग सेमती फेसबुक जमी कहले आम जानते सोशल मीडिया बट फेसबुक अलग प्रोडक्ट्स भी सेमती बहुत अच्छी व्हाट्सएप जोटा है फेसबुक ओन करे कि मेटा ओन करे मेटा एक्चुअली मेटा इज द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक ना तो एमती सब कंपनी से अलग करके ना चेंज कर सब ऑब्जेक्ट्स चेंज करते सो अल्टरेशन कौन करेंगे ना अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कंपनी हु हैज़ नॉट इश्यूड ए prospectus कौन आम आगे पढ़िया तो जब जन prospectus इश्यू करनी नॉट इश्यूड ए prospectus may change this object by passing a special resolution required to be passed by postal ballot except in case of OPC 1% company other companies having member up to 200 alteration objects company who has issued a prospectus जब से prospectus इश्यू कर दी raised money through public prospectus still has unutilized amount of money so raised shall not change the subject for which raised the money the prospectus unless a special resolution to postal ballot ताले माने से कहूँ जे जदि तुम पब्लिक मनी आनी prospectus इश्यू करी पब्लिक मनी आनीच ताले तुम ऑब्जेक्ट चेंज कर पानी अनलेस तुम से स्पेशल रेजोल्यूशन गोटे पास कराई पोस्टल बैलेट यूज करके पोस्टल बैलेट माने गोटे भोट दबार गोटे वे then होची notice in respect of resolution for altering the object shall contain the following particulars कौन total money received total money utilized for object stated in the prospectus unutilized amount of money so raised particulars to be proposed एटा सब कौन कौन रहिबो तमरा जेतले अल्टरेशन करिवो ऑब्जेक्ट्स रे नोटिस इन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट्स तो नोटिस गोटे दब ना लोक मानक जे वी आर गोइंग टू चेंज आवर ऑब्जेक्ट्स हु इज गोइंग टू चेंज द ऑब्जेक्ट्स कंपनी जे ऑफिसर्स माने अच्छन ना डायरेक्टर ऑफ एट अच्छन सपोज देयर इज ए पब्लिक कंपनी लाइक रिलायंस यू आर द शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस तुम रिलायंस गोटे शेयर किनछ तुम्हें तो डे टू डे अफेयर टेक पार्ट करना ना तुम्हें मेजोरिटी गोटे शेयर होते डे टू डे अफेयर टेक पार्ट करता कि तुम करूना तो जदि रिलायंस ना ऑब्जेक्ट चेंज कराई रिलायंस कह मुझे कि स्पेस बिजनेस रे एंटर करी जोटा इंडिया रे तो पॉसिबल नुहे मे बी यूएस से कह मुझे यूएस जी स्पेस बिजनेस रे एंटर करी यूएस रे अच्छा प्राइवेट कंपनी वेयर इनटू स्पेस बिजनेस इलन मस्क अच्छी स्पेस एक्स आमेजन अच्छी ना कौन ब्लू ऑरिजिन गोटे कहीं केमती गोटे अच्छी तो से रिलायंस कह मुझे स्पेस बिजनेस ये करेंगे से ऑब्जेक्ट्स क्लॉज रे चेंजेस करेंगे देन से चेंज कला पूर्व कौन ना यू एज ए शेयर होल्डर दे मस्ट सेंड यू ए नोटिस तुम जब किसी ऑब्जेक्ट करार तुम कर Then a liability clause. This clause states the nature of liability of the members. In case of a company with limited liability, it must states the liability of the members is limited, whether by shares or guarantee. Liability clause केते कार रहला से इनसटा liability clause रे मेंशन होबा सेमते हला अल्टरेशन rules made there under do not contain any provisions with respect to alteration of liability clause. However, since the relationship between member of a company is a contractual relationship, liability of a member of a company cannot be increased unless the member agrees in writing. तमने तमर जो liability टा अच्छी सेटा चेंज हो पारिबो नाही अनलेस यू एग्री टू इट जे तो तुम एग्री करे कथा ना आमे पढ़ले लायबिलिटी गारंटेड लिमिटेड बाय शेयर्स लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी दी प्रकार अच्छे लिमिटेड बाय शेयर्स माने व्हाट एवर हाउ मच परसेंटेज ऑफ शेयर यू आर होल्डिंग ऑफ द कंपनी योर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू दैट यू आर होल्डिंग 1% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी योर लायबिलिटी इज 1% बट सपोज योर लायबिलिटी इज बाय गारंटी even if you are holding 1% of the company you are guaranteeing that you are liable for 10% ता माने कौन होगा जितेबाला इन केस ऑफ वाइंडिंग अप सेतेबाला तुमरा जो लायबिलिटी तुम 10% अच्छे मैंने 10% कंपनी भैल्यू 10% तुमठू नि जापर इवेन इफ यू होल्ड 1% तो सी कौन ये जो जिनसा गोटे कंट्राक्चुअल रिलेसन रे जाऊँगी कारण तुम कंपनी संगे ही गोटे कंट्राक्ट कर ना केते कौन लायबल तुम हम तापाई तो सेटा तुमठू ही एग्रीमेंट करके चेंज कर नो अदर वे है तापर कैपिटल क्लॉज this clause indicates the amount of capital with which the company is registered and is known as registered or authorized or nominal capital केते टंका जो गोटे कॉमन पूल गोटे तुम जो कहती केते से कॉमन पूल रे टंकाटा आसिकी कंपनी हेते रजिस्ट्रेशन इनिशियली होची सेटा कैपिटल क्लॉज लिखा था सेंटेंस अल्टरेशन सब जिन चेंज हो पारे कंपनी सब जिन चेंज हो पार प्रोवाइडेड तुमको से प्रॉपर प्रोसीजर रे करा पड़ो
ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଆଜି ରିଟେଲ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, କାଲି ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ରିଟେଲ ବିଜନେସ୍ରୁ ପଳେଇବି ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିଜନେସ୍କୁ, କାଲି ଚାହିଁବି ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିଜନେସ୍ରୁ ପଳେଇବି मेडिकल ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस को पड़े एवरीथिंग कैन बी डन, नो इश्यूज, प्रोवाइडेड यू टेक द अप्रूवल, यू टेक गो थ्रू ऑल द प्रोसेस एवरीथिंग ओके। एते फ्रिक्वेंटली चेंज तो करती ना बट हो पार। अल्टरनेशन ऑफ कैपिटल क्लास सेमती हम। देन आसला आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Articles of association a company are its bylaws or rules, regulations that govern the management or its internal affairs or conduct of its business. Articles regulate the internal management of a company. They define the powers of its officers. They establish contract between the company and the members interests. The contract governs the ordinary rights and obligations incidental to the membership of a company. MOA रे होला कंपनी कौन बिजनेस करिवो, केमते बिजनेस करिवो, के को जगह डील करिवो, को जगह करिवो नहीं, दिस इज ऑल कंटेन्ड इन दी MOA. आर्टिकल्स कौन करे ना, इट इज दी bylaws or rules regulation govern the internal management. मन रखो मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स और इंटरनल मैनेजमेंट कहले भी सही सेम जिनस बुझा होछ। कंपनी भितर कौन केन जिनस हबो, हु आर गोइंग टू बी द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, CFO रहिबे, CTO रहिबे, CEO रहिबे, कौन रहिबे, MD रहिबे, VP रहिबे, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एम सब रुहंती कंपनी किए कौन रहिबे से जिनसटा आर्टिकल रे रहिबो। तांकर पावर केते रहिबो, से माने कौन कौन करि परिबे, जो मेंबर्स माने रहिबे तांको पावर केते रहिबो, मेंबर भितर कौन लायबिलिटी रहिबो, एवरीथिंग इज देयर इन द आर्टिकल। MOA रे रहिबला सब जिनस कैपिटल क्लॉज रहिला, तमरा ऑब्जेक्ट्स क्लॉज रहिला, आ से जोटा केते टंका एकाठी खर्च जोटा कौन कैपिटल क्लॉज जोटा हटा कैपिटल क्लॉज तो होला। तो इन सब जिनस रहिला MOA AOA रे ए जिनस रहिला। MOA एंड AOA कौन डिफरेंस, आर्टिकल्स रेगुलेट द मैनर इन विच द कंपनीज अफेयर्स विल बी मैनेज्ड, इंटरनल मैनेजमेंट जोटा। मेमोरेंडम डिफाइन्स द कंपनीज ऑब्जेक्ट्स एंड वेरियस पावर्स इट पजेसेस। कंपनी ऑब्जेक्ट कौन, कंपनी पावर केते अच्छे, अल्टा वेरियस जोटा में पढ़ले। Articles determine how those objects shall be achieved and those powers exercised. से ऑब्जेक्ट अचीव करे को जो मेंबर्स मैंने रहिले, डायरेक्टर हूँ से CFO, CTO, CEO जी भी रहिले, हाउ दे आर गोइंग टू एक्सरसाइज दैट पावर। तो कंपनी ऑब्जेक्ट हूँ प्रथम मेन कौन, कंपनी ऑब्जेक्ट मेन हूँ जब सफ्टवेयर बिजनेस आम सफ्टवेयर बिजनेस कर प्रॉफिट करूँ, से बिजनेस करिया को प्रॉफिट करिया को व्हाट द डायरेक्टर्स आर गोइंग टू डू, दैट इज देयर इन द आर्टिकल्स ओके। Consequently, the contents of the articles of different companies may vary substantially and utmost flexibility is allowed to the persons who form the company to organize his management as they wish. जी जहाँ इच्छा कर एना कहे आर्टिकल फॉर्म करी कहे गोटे कंपनी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर, प्रेसिडेंट इज द सर्वे सर्वर ऑफ द कंपनी, तांको इच्छा सी हम माने सी इंडिया प्रेसिडेंट जमी नॉमिनल हेड टिटुलर हेड सेमती कहते सेमती नुहति, कंपनी प्रेसिडेंट जी भी से सबू हे, से पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हे, सबू डिसीजन हम एक छत्रवाद शासन जो कहते अथोरिटारियनिज्म से सेमता रहे, तले CEO CFO सब रहे, जदि CEO CFO किसी भूल कर प्रेसिडेंट का पावर रहे एवरीथिंग, इफ दैट इज गोइंग टू बी देयर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी दैट इज ऑल्सो अलाउड। जदि एमती भी हम जो प्रेसिडेंट रे किंतु CEO CFO CTO एमानकर भी इक्वाल पावर रहिबा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहिबा। जदि किसी अप्रूवल नबार अच्छी कंपनी किसी फंड यूज करार अच्छी, यू कैन टेक अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट CEO CTO CFO समस्त नहीं पारे, एवरीवन हैज द इक्वाल पावर, कहीं काटे ऊपर नुहति। प्रेसिडेंट काम अलग किंतु थी, CEO CTO CFO तांकर काम अलग अलग थी, मे बी दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तमें मैंने इवें कहीपर प्रेसिडेंट जी अच्छा सी CEO ठू तले अच्छा, CEO आमर हेड हम, तुम क्या कह CTO जी अच्छा चीफ टेक्निकल अफसर ना कौन, CFO चीफ फाइनेंशियल अफसर, तुम क्या फाइनेंशियल अफसर आम हेड हे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। किंतु जनरली हुए तुम प्रेसिडेंट जी था तो टप ही था जानच नाटा सेमती हम। देन आसला डिस्टिंक्शन कौन एमती अच्छी पढ़ीद। देन हूँ कंटेंट्स, आर्टिकल से कौन रहा, shall contain such matters as may prescribe, however company may include such additional matters in the articles as may be concerned necessary for management. जहाँ company ये करेगा provisions for entrenchment कौन provides for the what it means that AOA may provide that certain provisions of the articles will not alterable merely by passing special resolution, they will require a more elaborate procedure to be followed. Provisions for entrenchment referred to above shall only be made either on formation of a company
by the amendment in the articles agreed to by all the members of a company, in such case of a private company, and by special resolution in case of a public company. Or the articles contain provisions for enticement, whether made on formation or by amendment, the company shall give notice to the registrar of such provision in such manner as may be prescribed. तमें से कौन थे कंपनी लॉ रो जोटा सब प्रोविजन देछि if there is going to be such any changes or amendment in the MOA or articles of association तो हमारा कोटी जनरल मेजोरिटी दरकार कोटी स्पेशल मेजोरिटी दरकार केमती कौन हम तमें से जिनसा चेंज करके तमें जहाँ कर ताठू कमी पार बट ताठू बढ़े पार कौन कहला What it means that AOA may provide that certain provisions of the articles will not be alterable merely by passing a special resolution. They will require a more elaborate procedure to be followed. खाली कंपनी लॉ रे अच्छी AOA रे चेंजेस करिया को हेले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करी हे जो बट तमे इंटरेस्टमेंट माने तमे कहबो जे आहुरी एलाबोरेट प्रोसेस दरकार खाली स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देले हबो नाही तमे कहबो सब शेयर होल्डर कोठू वोट करी काण सब शेयर होल्डर जदी मानुचन ताहले ही हबो मे बी यू हैव टू डू दैट तमे ऊपर डिपेंड करो देन हला कोन मॉडल फॉर्म section as per section 5 articles of a company shall be respective forms specified in कोटी कोटी रहला को फॉर्म ने तो articles of association लिखि दबो section 14 provides that subject to the provisions of the act conditions contained in the memorandum a company may by special resolution alter its articles including alterations having the effect of conversion of a private company in public company article change कर देता हम private को public करियो public company private ही करियो Conversion of a private to public केमती करियो where a private company alters its articles such manner no longer include restrictions limitations that are required to be include articles of a private company that its restriction contained in section 260 company shall as from the date of such alteration cease to be a private company तमे article एंट्री चेंज कर दबो जे जहा माने कोन प्राइवेट कंपनी ने हबार जहाँ रेस्ट्रिक्शन थी से पब्लिक कंपनी ने तुम इक्वाल कर दो तो पब्लिक कंपनी तुम होगा सेमती पब्लिक रू प्राइवेट भी हो पार स्पेशल रेजोल्यूशन ताको फाइल करबो जाके कोठी रजिस्टर जे अछन रजिस्टर ऑफ कंपनीज आरओसी तम कहंती देन फाइलिंग कॉपी ऑफ अल्टर आर्टिकल सेटा भी फाइल करियो सेक्शन 14 टू लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ आर्टिकल्स alteration must not exceed the powers given by the memorandum or be in conflict with the provisions of the memorandum memorandum होचे topmost document memorandum रे जहाँ छी तमे सेति के बेस करके article रे changes कर परिबो articles रे एमते तमे changes कर परिबो ना which goes against the memorandum alteration must not be inconsistent with the provisions of the companies act umbrella act hala ताको तो तमे काटी परिबोनी not to be inconsistent with alteration made by the tribunal where section 242 tribunal makes an order with respect to an alteration of the memorandum or AOA tribunal के national company law tribunal जो अछंती they can also order certain changes in the MOA or AOA जति सी करिसंती ताकू भी तमे काटी कर परिबोनी एंता सो अछि effect of altered articles कोन alteration bind members in the same way as the original articles change होला तो सेटा तो नया आर्टिकल हो ताकू भी तो माने पड़िबो procedure for alteration proposal approved by board of directors secretary shall convene meeting of the appointed date कौन procedure अछि देखिबो binding effect of MOA and AOA section 10 provides that memorandum articles when registered bind the company and some member to the same extent as if they have been signed by the company by each member and contain covenants on its and part to observe all provisions memorandum I mean thare the MOA and AOA जे तमे register करी देलो everyone who has signed to it is bound by it जहाँ लिखा है तो मेमोरेंडम हो आर्टिकल से हो जहाँ लिखा है तो यार बाउंड बाय मेंबर्स बाउंड टू कंपनी मेंबर में तो कंपनी को बाउंड रहे जानचो कंपनी भी मेंबर को बाउंड रहे उल्टा कारण दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन मेंबर्स बाउंड टू मेंबर ईच अदर भीतर भी से माने निजा ईच अदर पे बाउंड रहे whether a company or members bound to outsiders कौन The memorandum or articles do not confer any contractual rights upon outsiders against the company or its member. Even though the name of the outsider is mentioned in the article, the outsider, that is a non-member, cannot rely on the articles or association for his action against the company. Articles of a company provide that the board of directors could from time to time appoint anyone more than as managing directors. Under the articles, managing director can be removed the same way as other directors of the company, namely a special resolution. Outsider मैंने कौन है जी member of the company नहीं See hochi that person is not bound to the company whether directors are bound by whatever is contained in the articles kono the directors कोन ना तांका power articles रे direct करंती subject और तारे limitation रे semane रुहंती applied on their by the powers article if they contravene in provisions article
two parties may be affected, that is the company needs affect haba or outside the company जो होची इट सेठी सिना आउटसाइड द कंपनी को बाउंड नथला बट एठी कंपनी ता गोटे आउटसाइडर से डील करछु ना कंपनी रे जति मेंबर अछंती दे आर लायबल टू ईच अदर दे हैव ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन दैट इज फाइन बट इफ यू हैव फॉर्मड अ कंपनी you are going to deal with the outsiders ना you are going to deal with another company you are going to deal with another person तो तमे सेटा लोक तो किछटा बाउंड हो ना तमे ताको किछ भूल करछ then asla doctrine of constructive notice कौन provides that the memorandum of articles when registered with the register of companies become public documents and they can be inspected by anyone by electronic means on payment of prescribed fee तो से कहूँ गोटे डक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जोटा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज आम पढ़ी वंस गोटे जिनस रजिस्टर होची इट इज अज्यूम दैट everyone in the public has notice about it that is known as constructive notice actual notice मैंने तो मैं actual देखा constructive notice मैंने it is assumed in the law that you have notice about it if you have not actually seen it it is your fault then तो गोटे जदि MO and AOA कंपनी रजिस्टर हो जाउची with ROC सेटा सेमती कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो जाउची इट इज इन द पब्लिक डोमेन इट बिकम्स ए पब्लिक डॉक्यूमेंट तो इट विल बी अज्यूम कि तमे सेटा जानिछ कहीं जिनसा यूज कराउची भाई बिकॉज इफ ए कंपनी is going and dealing with another third party company and सी जहाँ डील कर तमें सेटा निजे हिसाब रे तमें तमर डिलिजेंस करके देखिबो लेट्स से देयर इज ए कंपनी कॉल्ड ए इज कमिंग एंड डीलिंग विथ यू दैट यू विल बी डूइंग सच एंड सच बिजनेस विथ यू तम संगे रिटेल तमें देखछ से सॉफ्टवेयर कंपनी बट से तम संगे से रिटेल बिजनेस करे बोली डील करी पड़ुछथि ओके रिटेल बिजनेस जोटा हम बुझोतले बिस्किट सप्लाई करे कहला व्हाटएवर तो सेही जिनसटा तांकर एमओए एंड एओए रे अलाउड अछि कि नहीं तमें सेटा केमति जानिबो तमें सेटा हेई एमओए एंड एओए देखिक जानिबो एठी तमें जो आरओसी अछन तांकठो एटा देखिक जानि परबो सी मे भी मिछा कहि दे परबे आरओसी रे तो डॉक्यूमेंट पूरा ओरिजिनल थिबो ना तमें सेटा जेहेतु आरओसी पाखरे अछि रजिस्टर ऑफ कंपनी तमें तांकठो मगे से पेमेंट ऑफ फीस ये करी देख परिबो Therefore, any person who contemplates entering into a contract with the company has the means of ascertaining and is thus presumed to know the powers of a company and to the extent which they have been delegated to the directors. तमें यदि कंपनी से डील कर it is expected that you know about what is written in the MO and AO. That is your responsibility. That's why the doctrine of constructive notice. But TP Act them पढ़ी Then हला doctrine of indoor management. एटा पुनी कौन The rule of constructive notice proved too inconvenient for business and transaction, particularly where the directors or other officers of the company were empowered under the articles to exercise certain powers, subject only to certain prior approvals or sanction of the shareholders. Whether those sanctions and approvals had actually been obtained could not be ascertained because the inventors, vendors, creditors, other outsiders could not dare to ask the director in so many hours about the sanctions having been obtained or to produce the relevant resolution. Quite naturally, suppose if you have desire to bond a debenture issued by a company, you are not going to ask directors of the company to produce shareholder resolution authorizing them to issue such bonds before you subscribe to them. सिराहिदा कथा जिनस होची कंपनी भितर कौन चलुची गोटे आउटसाइडर जानिबाटा एते सहज कथा नुहे तमें सब भी सेटा एक्सपेक्ट करें जे यू एज ए आउटसाइडर दे विल बी टेलिंग इट टू यू इफ ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इफ सपोज इफ देयर इज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी एंड देन डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज इशुइंग ए बॉन्ड और डिबेंचर को आगे बढ़िया बॉन्ड एंड डिबेंचर ऑफ ए कंपनी इट इज एविडेंट कि तमें भाव दैट पर्सन इज अथोराइज ना बिकॉज ही इज द डायरेक्टर जब गोटे प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी सेमती कर इट इज एविडेंट यू नो कि प्रेसिडेंट अथोराइजेसन थी एक्चुअली अच्छी कि नहीं से जिनसा तुम परर कथा बट तुम तो जान मैंने भाभी पार ना सी अच्छे कारण बिकज इज द प्रेसिडेंट बिकज इज द डायरेक्टर अथोराइजेसन थी ही थी दैट इज यू कैन फेयरली एज्यूम तो बट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से likewise if a director approaches and if you do maybe you will lose a good customer since there are no means to ascertain whether necessary sanction or approvals have been obtained before certain officer exercises his power which as per article can be only exercised subject to certain approvals. Those dealing with the company can assume that if the directors or other officers are entering into the transaction they would have obtained the necessary sanction. This is known as doctrine of indoor management. तो जदि गोटे डायरेक्टर गोटे बॉन्ड एंड डिबेंचर इश्यू कर आर्टिकल से लिखाई गोटे डायरेक्टर बॉन्ड एंड डिबेंचर इश्यू कला पूर्व अप्रूवाल नहीं ऑफ एवरी अदर डायरेक्टर एंड इफ से जिनटा से करुच्ची यू कैन फेयरली अस्यूम कि से अप्रूवाल नहीं तो कंपनी इंटरनल डॉक्यूमेंट तुम सब इंस्पेक्ट कर पारिबनी दैट्स व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अबाउट एक्सेप्शन कौन
ସେଟା ଆଉଟସାଇଡର ହାଜ୍ ନଲେଜ ଅଫ ଦ ଇରେଗୁଲାରିଟି। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇନି, ଦେନ୍ ତମ ଉପରେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେବଲ ହେବନି। नो ନଲେଜ ଅଫ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, ତମେ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ, ଫର୍ଜରୀ ହେଇଛି, ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ହେଇଛି, ଏଇ କେସ୍ରେ again doctrine of investment does not further the question is regard to very existence of an agency। एजेंसी को जो जिनसा कौन ना एजेंसी तमें मे भी टॉटे पड़थिबो where principal and agent relation अछंती सेटा जानियाटा भी ascertain करवाटा भी इजी कथा नुहे। तो सेई जिनसाटा कहूची where the question is regard to the very existence of agency, एजेंसी अछि कि नहीं से विषय जानियार अछि कि नहीं, ई जिनसाटा तमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से अप्लाई हो। ओके ठीक अच्छे।